I am Aam Aadmi Party candidate from Hamirpur, Uttar Pradesh, and I have done BTech from IIT Roorkee and an MBA from Ahmedabad. And after that, I was doing my job when I was inspired by Jan Gopal movement and the formation of Aam Aadmi Party. I joined there. So after that, while doing my job, I could not find much time to contribute to the movement and to the party. I realized that I need to jump, and I need to come out of my corporate life and do something worthwhile for the nation and for my region also, if an opportunity comes. Okay, and that's why I joined the party and went for the rallies, and I was also part of the preparation team for UP manifesto under the guidance of Adarsh Shastri ji. Okay. Post that when like now I have like when the ticket has been announced, so I have passed on that responsibility to the Lucknow team, and I have now come down to my Khet. Now my planning goes like this. I am among the front runner candidates out here, and my planning goes like this. I have opened all the Vidhan Sabha offices out here. I have opened all the block level offices out here, and now I have also filed the nomination today. Yeah, and now my planning is like I have inaugurated most of the offices and setting up the offices now. Volunteers have started coming and people are joining the party. So like people are coming to the offices and they are like sharing thoughts with each other. I usually go there while passing on from a route. I will try to cover all the offices. So this is my plan. Now, why I join? Why like? Let me tell you something about Hamirpur that will help you relate what Hamirpur is and how backward it is and why it needs like a person from Aam Aadmi Party to make it a much better place for the poor and needy people to live in. Hamirpur belongs to the Bundelkhand area. Bundelkhand has 5 districts in Uttar Pradesh and 7 in MP. It is one of the most backward region of the country, and very frequently we hear about farmers committing suicide. Also, we hear about Mr. Rahul Gandhi going there and residing in a village or house of a scheduled caste person, but nothing comes out of it. Okay, now I belong to this particular region, and I was also born out here. Now my responsibility out here is this is the opportunity to make a big change in this particular area. A lot of money has come in this area from the government, but nothing has done any major change. Like there was a Bundelkhand package of 3,000 crores, which was there, but nothing trickled down to the lowest level. So that was one thing. And like had a small portion of the money even come down to the poor masses, lot of changes could have been done. This area does not have I would say, a proper railway station. The railway station is 12 kilometers far, and that too, very few trains stop there. That is one of the major problem of connectivity. The roads are not in a very good condition. That is a problem. Electricity is a major problem. Water is a major problem. So all the basic problems are present in this area. And in the past 66 years after independence, no major development has been done. This gives a very good ground. Like if work can be done out in this region, like we have done in Delhi, and in a very short time, lot of things can be achieved. I think that will be a very major step, and people will be able to appreciate that. And then the same thing can be done like across the entire Bundelkhand region of UP and MP. And like my team of people includes my friends from IIT Roorkee and I am Ahmedabad who are helping me out in this initiative. And I formed a core team which is helping me in this election campaign. We are also like a lot of local people and volunteers have also joined. So things are going in a very good shape. And my vision is to uh, like I am working on all the areas which are basically required, like uh, for to win the election. Okay, primarily covering there are more than 1100 villages in the entire area. So that is a big challenge how to cover those villages. So what I have strategy I have adopted, like we have 5 Vidhan Sabhas, okay, and 14 blocks, and then in that we have got 1100 approximately 1120 villages. So what I have done that comes out to 80 villages for each particular block. What I have done, I will try to form a cluster of 9 people,
of 9 villages, and similarly in a block there will be 9. So that is a mathematical calculation that how I am planning out to do that. Okay, on a broader front, like a chain reaction kind of has to be assured, then only things can be achieved in such a short time. And not like after having filed the nomination, now I can completely concentrate on the all the prachar prasar in my kshetra. So I'll give you an opportunity again. So Atul, if you could answer the same issue about media coverage, that will be helpful. I think that has come for everyone. मीडिया का रिस्पॉन्स नॉर्मली सिमिलर रहा है जो what Pranjal has told and what Arlington has told. Not I would say very positive, especially the big newspapers, but some local newspapers have given some coverage. So the response has not been overall. It is below satisfactory, I would say. But let's see. Let's drive the campaign. We'll drive our campaign. We should focus more on that. And I think if we drive the campaign and we are strong enough, the media will definitely follow the news and they will provide us the coverage. See, one of the things we had Arvind Kejriwal come into one of our Google Hangouts from while he was campaigning. He came in for a quick 2-minute this one, and he said that there's a huge difference between what the media reports and what is actually happening on the ground. Do you see that same difference in your constituency as well? Definitely, very much. Yeah, and I would say there are news of other candidates coming, but at the same time, big news like we are opening a lot of offices in a very record time, so that is not coming out there. तो वो अंतर है और रहेगा भी, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल से लेके सारी चीजें नीचे ट्रिकल डाउन करती हैं, और हम लोकल लेवल की बात करें तो वो चीज वहाँ भी आती है. हाँ, हालांकि ये चीज काफी चेंज करी जा सकती है जब जनता को खुद ही लहर दिखने लगती है, तो न्यूज मीडिया भी अगर नहीं कवर करेगा तो फिर then it is a negative for them also. So we have to drive to directly contribute to their campaign. So I'm going to just pass on the floor to Atul. So Atul, go ahead and unmute yourself, and you can address the same issue of how people can help. First, I'll take up that social media question. Sure. Social media was earlier going good, but after the ticket was announced, a lot of responsibilities came, and we have to jump out there in a very short time. So after that, social media got down. But anyway, my plans are there that now things are more or less stabilized. Social media will also get to the same level once again. Regarding the funding part, yeah, that is a problem. We have a new party, and we don't believe in corruption. Okay. So that's normal logic. Fighting elections is not an easy thing. But yes, like whatever, I am also facing some problem on account of it. And if friends and well-wishers and supporters who are like past, I'm sorry, who have joined this hangout and who see this video after this particular hangout can contribute well, so that will help us sail through, because that is one of the problems that I am also facing. And at a personal level, I am doing at my level of my relatives and friends. I am doing my friends from IIT, and I am also supporting. But winning an election, money is a requirement, and one should not be weak on that particular part. And like election commission has given a limit of 70 lakhs, and that is good enough to win an election. So I think a lot of supporters will help us out, especially NRIs, especially people from working in prestigious corporates, working in prestigious from IIT, IIM, and anybody, like be it a common man who is willing to contribute. But for people of the particular region, they can contribute to physical interaction. But for other people, they can contribute to online. So that will be great. And I think if the bigger vision should be there to have a clean governance, because corruption impacts each one of us, whether we are working in a corporate company, whether we are working in a government institution. Corruption is a major issue, and that is the agenda of the party. And if other parties come to power, there is bound to be corruption. All the parties, be it national, be it regional parties, most of the regional parties, they are all prone to corruption, and they have done corruption. Taking a cue from that, I think effort should be done, and funding can be done. That will be of great help. Regarding the betterment of my region, Hamirpur constituency, and especially Bundelkhand also, which is a poor region, and where, like, if Aam Aadmi Party wins a good amount of seats,
the winning candidate, they can do a lot of work in this particular region, and that will, I think, directly impact. Because if I talk about the development level, that is in the negative, and if we do some good work out here, this will count as, and then carry on with the same pace to what we have done in Delhi under the guidance of our senior leadership and Kejriwal. I think a lot of good work can be done in a very short time, and that will can stand out as a model for the entire country. Like Delhi is standing out as a model for the entire country, and then a lot of things can be developed on that. So no, right now the first thing is winning the general election, yeah, and putting all our effort into that. All right. Thank you. I'm going to come back. I've heard about AAP because of all the media coverage. How is it working out in the rural areas? Because not that many people know AAP. How has that changed for you in UP and in your constituency? A very good question, and I would answer it in detail. First of all, it is a rural phenomenon. Why it is a rural phenomenon? See, the people who are living in villages, like अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें 66 ईयर्स में कुछ नहीं हुआ है. जनता यहाँ पे 4 पार्टियां आ चुकी हैं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी. चारों पार्टियों ने सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक है. लोअर लेवल से लेके टॉप लेवल सांसद तक के लोग आ गए, मंत्री तक के लोग आ गए, ठीक है, लेकिन हुआ कुछ नहीं. यहाँ की जो जनता है वो त्रस्त है. वो त्रस्त है क्योंकि उसकी बेसिक नीड नहीं पूरी होती. अब मैं ये गूगल हैंगआउट जो अरेंज करा रहा हूँ, आई विल टेल यू फ्रैंकली, मुझे इसके लिए ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेने में प्रॉब्लम हुई. मुझे इसके लिए एक इन्वर्टर लगवाना पड़ा जहाँ मेरा घर है, ठीक है. और इसके लिए मुझे पूरा एक प्रॉपर ऐसा सेटअप, मुझे एक माइक खरीदने के लिए मेहनत करनी पड़ी कि माइक में दुकान में गया, कई दुकानों में गया, मतलब मैं खुद नहीं गया, बट आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज मैनेजिंग माय आईटी टू गेट दिस. सो गेटिंग दीज बेसिक थिंग्स इज अ वेरी टफ थिंग. तो जनता पूरी तरह से त्रस्त है. तो अगर इसमें आम आदमी पार्टी फिट्स इन वेरी वेल. अरविंद केजरीवाल इज अ हाउस होल्ड नेम आउट हियर, ठीक है. एंड रिगार्डिंग जो प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, कि हमारी जो टोपी है, दिस इज डूइंग मैजिक. जब भी मैं कहीं निकलता हूँ रोड से, कहीं रुकता हूँ, आई रुकता हूँ, वेट फॉर सम टाइम एट समवेयर, सो पीपल कम एंड दे आस्क फॉर लॉट ऑफ टोपी. और जब आप उन्हें टोपी बना देते हैं तो ये सबसे सस्ता प्रचार प्रसार का माध्यम है. फंडिंग की हमारी काफी प्रॉब्लम इसकी वजह से भी सॉल्व हो जाती है कि हमारी जो प्रचार का माध्यम है या जो हमारी टोपी है, दैट इज अ वेरी लाइक आई वुड से इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ. तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी बिल्कुल सही फिट होती है. हाँ, चैलेंज है लोगों तक पहुंचना. जो रोड, जो गांव है या जो कस्बे या जो ब्लॉक्स रोड्स पे हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में 1120 गांव हैं. अगर मैं कई गांव हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं है, जहाँ पे रोड तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं है. तो चैलेंज है कि 30 अप्रैल से पहले या 28 अप्रैल से पहले उधर तक पहुंचना. बट वी आर ट्राइंग एट अवर लेवल बेस्ट. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वॉलंटियर्स, हमारे जितने भी ऑफिस खुले हैं उसमें जो जुड़ रहे हैं, हर एक गाँव के 2 या 3 वॉलंटियर्स वो जिम्मेदारी लेंगे. प्रचार प्रसार का जो मटेरियल है वो सारी चीजें उधर तक ले जाएंगे और उनमें बांटेंगे, गांव गांव में, घर घर में जाके. अब पूरी कोशिश करी जाएगी कि जितना पूरा एरिया 17 लाख के आसपास की हमारी आबादी है, वोटिंग पॉपुलेशन है, तो उसमें जितना कवर हो सके उतना कवर किया जाएगा. एंड मुझे लगता है कि यहाँ की जनता कनेक्ट होना चाहती है, खुद ही कनेक्ट होना चाहती है. रीजन बिंग, उनको अभी तक गरीबी से रह रहे हैं. बुंदेलखंड का 3000 करोड़ का पैकेज आया, आम आदमी को कुछ नहीं मिला उसमें. जो आम आदमी है, आज भी मैं अपने 3 ऑफिस के उद्घाटन करने गया हुआ था, तो वहां भी मैंने लोगों की भीड़ देखी और लोग कहते हैं कि भाई, मतलब दे आर वेरी मच इन सिंक. जो हम आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी रही है दिल्ली में कि भाई आपने मूल सुविधाएं पूरी कर दी, बिजली, पानी, एजुकेशन और आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें मेन समस्या यहाँ की भी है. यहाँ का जो किसान है, यहाँ पे ओले पड़ जाते हैं, बारिश हो जाती है, उसकी भुखमरी की स्थिति आ जाती है. कई किसानों ने आत्महत्या भी कर लिया. वो सारी चीजें कब जा पाएंगी? सारी चीजें तब जा पाएंगी जब एक ऐसी सरकार, आम आदमी पार्टी जैसी सरकार यहाँ पे आएगी जो कि यहाँ पे भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से देश से मिटा देगी. तो वो चीजें, पीपल आर लुकिंग फॉर दैट, पीपल आर लुकिंग फॉर चेंज, and Aam Aadmi fits very well into this chain. But only thing has been the shortage of time that has come in between, because general elections have come too early. Nevertheless, मुझे पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड से पार्टी की कुछ चीजें निकलेंगी और हम लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो पार्टी के बड़े नेता हैं, केजरीवाल जी, संजय सिंह जी और कुमार विश्वास जी, वो यहाँ पे आके रैलियां करेंगे तो उसका प्रभाव आई कैन, मतलब एश्योर, अभूतपूर्व रहेगा. क्योंकि यहाँ की जनता उनसे जुड़ना चाहती है, देखना चाहती है. सुना बहुत है केजरीवाल जी के बारे में, पर केजरीवाल जी बहुत है, ठीक है, एक बार अगर उनको देख लेगी हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैली करके यहाँ पे काफी कुछ किया जा सकता है. पूरे एरिया में एक लहर
और एक हलचल पैदा करी जा सकती है। आम आदमी जो कनेक्ट होना चाहता है वो कनेक्ट हो रहा है और बहुत तेजी से कनेक्ट हो सकता है। Right. Yeah. Okay. Next engagement, feel free to drop off the line. All right. Thank you so much for being here with us. Thank you. Thank you. Atul, go ahead. रास्ता अभी रास्ता काफी कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंजिल नहीं पाई जा सकती है। और मुझे जब भी मैं कभी मतलब पहले कभी राजनीति करी नहीं, कभी किसी भी लेवल पे कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए, इलेक्शन भी नहीं लड़े, ठीक है। अब मौका मिला है तो इतने बड़े इलेक्शन लड़ने का, तो कई बार हिम्मत जवाब भी दे जाती है। इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है काफी दूर पे, काफी हर तरह की चीजें मैनेज करनी पड़ती है, टीम बनानी है। तब मैं अरविंद केजरीवाल जी को याद करता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि एक आदमी पूरा देश में लगा हुआ है, कि डायबिटिक, ठीक है, और उनकी उम्र मेरे से 10-12 साल ज्यादा भी है। उसके अलावा जैसे वो रोड शो करते हैं, रैली करते हैं, मैनेज दिल्ली गवर्नमेंट, उन्होंने इतने से ढेर सारे काम इतने कम समय में करे, और उससे पहले भी लगे रहे। तो वो एक इंस्पायर करते हैं मेरे को कि नहीं, मतलब अगर वो पूरे देश में लग के शीला दीक्षित को चैलेंज कर सकते हैं, कांग्रेस को चैलेंज कर सकते हैं, बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं, ही कैन चैलेंज ऑल दी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, ही कैन चैलेंज द क्रोनी कैपिटलिज्म, so why can't we win a seat for him? And that's why I would say कि I would pull up all my socks, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, जो भी हो सकेगा। और this is for केजरीवाल जी, this is for the people of my constituency, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था I have been a very like, मैंने पढ़ाई लिखाई जो करी तो मैं कॉर्पोरेट लाइफ में गवर्निंग को दबाता, ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा एहसास होता था कि क्या मैं वाकई कुछ कर पा रहा हूँ कॉर्पोरेट लाइफ में। आप किसी प्राइवेट पर्सन के लिए मनी अर्न कर रहे हो, दैट इज गुड इन सम सेंस, बट अगर आपकी लाइफ पे आपकी एजुकेशन का, आपकी जो दिमाग है उसका इस्तेमाल जनता की सेवा के लिए हुए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वो सारी चीजें हम कर सकें। और ये ऐसा मौका मिला है लाइफ में जो कि जिंदगी में बार बार नहीं आता, इस मौके को गंवाने का कोई मतलब नहीं है। और पूरे जी जान के साथ पूरी कोशिश है मेरी कि ये सीट को निकाला जाए, इसके अलावा और आगे पार्टी को भी आगे ले जाया जाए। और अभी तो अभी जो टारगेट है वो ये इलेक्शन है, और इलेक्शन में पार्टी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी उतना सभी, मैं तो ये कहूँगा सभी देशवासियों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो दिस इज माई, सभी लोगों से विनती है, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, कि जिस भी रूप में आप सपोर्ट कर सकें, वॉलंटियर से बेस पे सपोर्ट कर सकें, टेक्निकली आपको सपोर्ट कर सकें। lot of technical people might be there, they can help out in social media, they can help out in SMS campaign, they can help out in call recording campaign, in whatever way they can support, if people can support through funding। तो जिस भी तरीके से सहयोग कर सके आम आदमी पार्टी को सहयोग करिए, और मुझे पूरा विश्वास है ये पार्टी आपको निराश नहीं करेगी। जो पिछले इतने सालों में देश में कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और जो वो भी पार्टी करके दिखाएगी, और एक पार्टी दिखाएगी कि पाक साफ राजनीति। एंड एक शब्द मुझे हमेशा याद आता है जब मैं सीपी के ऑफिस जाता था, कि राजनीति और ईमानदारी एक साथ रह सकती है। जो हमारा सीपी का ऑफिस है उसकी बिल्डिंग में अरविंद केजरीवाल जी का वो लगा है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि ईमानदारी और राजनीति एक साथ हो सकती है, ऑनेस्टी एंड पॉलिटिक्स कैन कोएग्जिस्ट, एंड आई थिंक इट विल एग्जिस्ट एंड इट इज बाउंड टू बी देयर।